Hello and welcome to the YouTube channel of Ranker Buzz. Today we will discuss about the landmark judgments of the year 2021 and 22. We have already discussed some of the landmark and important judgments of the 2021 and 22. And today we will discuss more about it, more number of cases. So let's start with the today's session. So the first case in the today's class is the Lakshmi Bai Chandargi versus State of Karnataka 2021. So if I talk about this particular case, then this case is actually dealing with the right of a person, right of a person to choose its life partner. So in this particular case, the Supreme Court has made this right to choose the life partner to be a constitutional right, or you can say a fundamental right under Article 21. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किया है और कहा कि ये एक फंडामेंटल राइट है कि यू कैन चूज योर लाइफ पार्टनर एज पर योर चॉइस विदाउट एनी pressure or without the consent of your parents. You have that right that you can choose your partner. So let's look at this particular case, the facts of the cases, and what is the issue arised in this particular case, and what is the observations being made by the Honorable Supreme Court. So if you look at this case deals with the right to choose your life partner as a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. भारतीय संविधान के अंदर जो है फंडामेंटल राइट की बात करता है, राइट टू चूज योर पार्टनर. आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रोसीजर. तो आर्टिकल 21 को अगर हम देखें तो वो बात करता है दैट नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी. जो एक पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की बात है वो किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटीजन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट कि अगर लॉ का कोई प्रोसीजर है जो कि वहां पे कुछ एक्सेप्शन की बात वहां पे करता है. सो नाउ लेट्स लुक एट द फैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर केसेस कि इसके क्या फैक्ट्स थे. सो इफ यू लुक एट द फैक्ट्स in this case, the petition number 1, that is Miss Lakshmi Bai Chandaragi, went missing from a home 14th October 2020. तो 20 यहाँ पे 14 अक्टूबर 2020 को जो है यहाँ पे लक्ष्मी बाई जो थी अपने घर से मिसिंग थी, एंड देयरफॉर हर फादर फाइल्ड अ एफआईआर दैट शी वाज मिसिंग. और यहाँ पे फादर ने जो है, जैसा कि अमूमन होता है, यहाँ पे भी एफआईआर फाइल की गई फादर के द्वारा ऑन द सेम डे. The investigating officer recorded the statement of the parents and relatives. और वहाँ पे जो भी investigating officer थे उन्होंने parents और जो भी relatives थे उनके वहाँ पे जो है statements को record किया. During the investigation, the call records of the missing woman revealed about a man named संतोष सिंह यादव. अब यहाँ पे जिस दौरान ये इन्वेस्टिगेशन किया गया तो कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया गया. कॉल रिकॉर्ड्स को जब चेक किया गया तो उसके अंदर कुछ कॉल्स जो हैं वो संतोष सिंह यादव के नाम से मिली, जो कि इस केस के अंदर पिटीशन नंबर 2 है. बोथ मेन एंड वुमेन मैरिड ऑन 15th October 2020. और जैसे कि यहाँ पे पहले था कि 14th October को मिसिंग हुई थी एंड ऑन 15th October दे गॉट मैरिड. यहाँ पे इन दोनों ने ही लक्ष्मीबाई और संतोष ने जो है आपस में शादी कर ली थी. द वुमेन सेंड हर मैरिज सर्टिफिकेट टू हर पेरेंट्स थ्रू व्हाट्सएप. और व्हाट्सएप के थ्रू जो इनका मैरिज सर्टिफिकेट था उसको यहाँ पे जो है इन्होंने अपने पेरेंट्स को बाद में शादी के बाद भेजा. देन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ट्रेवल टू गाजियाबाद. और वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, आईओ थे, वो जो है गाजियाबाद तक आए, वेयर द पेरेंट्स ऑफ द मेन लिव, जहाँ पे कि उस लड़के के पेरेंट्स रहते थे. लेकिन ऑन विजिटिंग द पेरेंट्स दे सेड दे वर अनअवेयर अबाउट द कपल. दे हैव नो आइडिया दैट वेयर दे आर लिविंग. और उन्होंने शादी वादी की है ऐसा कोई जानकारी इनको नहीं थी. On establishing the contact with the woman, the investigating officer asked the woman to give her statement in मरगॉड पुलिस स्टेशन विच वॉज इन अ होम टाउन. तो यहाँ पे जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब कांटेक्ट बनाने में, संपर्क बनाने में कामयाब हुए उस लड़की से, उस वुमन से, तो वहां पे उन्होंने उसे कहा कि आप जो है स्टेटमेंट दीजिए अपने हमारे हिसाब से जो है पुलिस स्टेशन चलकर.
द वुमन रिफ्यूज टू रिटर्न बैक टू द कर्नाटका बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अ पेरेंट। और यहाँ पे लड़की ने मना कर दिया जस्ट बिकॉज कि उसको डर लग रहा था अपने पेरेंट्स के भी किस तरीके का उसके साथ व्यवहार किया जाएगा वहां पे। The investigating officer refused to close the case and threatened the couple of registering false case of kidnapping against the men and a case on woman of theft in her house so that she can return back to home। और यहाँ पे जब लड़की ने मना कर दिया, इसके बाद लड़के ऊपर प्रेशर डाला गया फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि अगर आप मेरे साथ वापस नहीं चलेंगे, हमारे साथ वापस नहीं चलेंगे, देन वी विल फाइल अ फॉल्स केस अगेंस्ट द मेन ऑफ किडनैपिंग दैट कि उसने किडनैपिंग की है, एंड वुमेन के अगेंस्ट हम जो है वो थेफ्ट का केस करेंगे कि वो अपने घर से चोरी कर कर भागी है। ये एक तरीके से डराने की यहाँ पे स्ट्रैटेजी थी कि जिस वजह से कि वो अपने घर वापस लौट जाए। देन out of all this, the couple approached the Allahabad High Court on 19th October 2020, but this matter was not taken up after requesting the matter should be listed in urgent hearing list। तो यहाँ पे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट गए जहाँ पे इन्होंने कहा कि इसको अर्जेंटली सुना जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने वहां पर उसको जो है अर्जेंट बेसिस पे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड आफ्टर दैट जब ये एक्सेप्ट नहीं हुआ हाई कोर्ट में, देन एट लास्ट द कपल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जब वहां पे नहीं बनी बात तो फिर ये इन्होंने यहाँ पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। नाउ दीज वर द फैक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। इसके भाई क्या क्या इस केस के फैक्ट्स थे। वी हैव गॉट दिस स्टोरी। नाउ व्हाट इज द इशू इन दिस पर्टिकुलर केस, आखिर इशू क्या है इस केस के अंदर। सो इशू इज वेदर द एफआईआर शुड बी क्वेश्ड एज बोथ द पार्टीज मैरिड ऑन देयर ओन विल एंड विद कंसेंट। क्या यहाँ पे जो एफआईआर है उसको क्वैश कर देना चाहिए, उसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टीज ने जो मैरिज की है वो अपनी फ्री विल से की है और एक कंसेंट के साथ की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है शादी के दौरान। सो दिस वाज द इशू। नाउ कमिंग टू द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन दी यहाँ पे, दैट वी विल सी। द कोर्ट वॉज नॉट हैंडल वेल बाय द पुलिस अथॉरिटीज। यहाँ पे कहा कि भी जो केस वॉज नॉट हैंडल वेल, यहाँ पे पुलिस अथॉरिटी ने केस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया है। द investigating officer already had a conversation with Lakshmi and she clearly stated that she was married to Santosh and she was feeling threatened to go back to her home town to give her statement in the police station। और यहाँ पे जो लक्ष्मी है उसने क्लियरली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पहले ही कह दिया था दैट कि मैंने जो है अपनी रजामंदी से शादी की है संतोष से और मैं अपने घर जाने में मुझे डर लग रहा है, तो आई डोंट वांट टू गो बैक। Investigating officer could easily record Lakshmi's statement rather than threatening or forcing her about filing a false complaint against her husband। तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि भी इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर थे वो चाहते तो बहुत आसानी से जो है नॉर्मल तरीके से उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते थे, रादर देन कि उसको थ्रेटन करना कि भी अपने हस्बैंड के खिलाफ तुम फॉल्स केस यहाँ पे करो। इसके अलावा वो था चाहते तो उस चीज को आराम से जो सच्चाई थी, जो ट्रू स्टेटमेंट था उसको लेके वहां से जा सकते थे, बट ऐसा यहाँ पे अथॉरिटीज पुलिस अथॉरिटी ने ऐसा नहीं किया। The Apex Court correctly stated that younger generations who are educated are choosing their life partners, which is against the old social norms where caste and religion played a crucial role, and such educated youngsters are facing threat from their family members, and the court have been coming to aid of these educated youngsters। तो कहता है कि समय के साथ जैसे चीजें बदल रही हैं, तो जो यंग जनरेशन है जो एजुकेटेड है, they want to choose their own partners, own life partners against the social old social norms, जिसके अंदर कि हम सिर्फ एक कास्ट में या एक रिलीजन में शादी किया करते थे। उस चीज से बाहर निकल के जो एजुकेटेड यंगस्टर्स हैं वो उससे बाहर निकल के जो है अपने फ्री विल से शादी करना चाहते हैं, आउट ऑफ द एंड बट नाउ दे आर फेसिंग द थ्रेट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। एंड कोर्ट्स जो है डेफिनेटली उनकी मदद के लिए यहाँ पे आना चाहिए कि भाई अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है, ऐसी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई। देन the case which were referred by the court clearly stated that individuals have right to choose their life partner under Article 21 of the Indian Constitution, and the approval of elders is no importance if the two individuals have their free consent to enter into wedlock, as a choice of an individual is a part of dignity। तो यहाँ पे कोर्ट कहता है दैट कि भाई इंडिविजुअल जितने भी हैं, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, दे हैव द राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर एंड इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
And the approval of elders have no importance if the two people who are going to get married having their free consent. अगर उन दोनों की free consent है, then elders की जो approval है उसका कोई भी matter या कोई importance नहीं बनता है, because it is related to the dignity of an individual to choose their life partner. Hence, the right to choose a life partner is a fundamental right which is protected under Article 21 of Indian Constitution. This case tells us that if there is a consent between the two adults to get married, then there is no need of approval of the family members. तो अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ से पता चलता है कि अगर दो जो adults हैं, अगर वो दोनों शादी करना चाहते हैं, then there is no need of taking approval from the family members. If they are okay with it, then it's fine. Even if they are not okay, but the men and the women who are going to get married are, in consent with each other, then they can definitely get married, and this is their fundamental right, that is to right to choose their life partner. So this is it from this particular case. Now coming to the next important case, that is Election Commission of India versus MR Vijay Bhaskar 2021. This is again a very important case as it was there in the news में था ये during the, because after the COVID, in this particular case it was went to the court that first they went to the election commission that COVID protocols must be adhere with when it comes to the elections. जो boothing polling booths है वहाँ पे जो है पूरे arrangements किए जाएं और किसी तरीके से कोविड ना फैले, ऐसी चीजें यहाँ पे आई थी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे या कैंडिडेट थे उन्होंने ऐसा यहाँ पे बोला था इलेक्शन कमीशन को। After that, the case went to for certain reasons, the case went to the Madras High Court, and वहाँ पे जब ये गया तो the controversy arose that during the hearing, the court, in an oral conversation, said that the election commission is solely responsible for the spread of COVID-19. That phase 2 of COVID-19, second wave of the COVID-19, only the election commission is responsible for the same. ऐसा statement वहां पे दिया था, लेकिन ऐसा कोई on record बात नहीं आई थी, but it was reported by the media. It was reported by the media that this has been pronounced by the Honorable High Court of Madras. वहां पे ऐसा कह दिया गया था कि भाई जो है हाई कोर्ट ने ऐसा ऐसा कहा, और ये सारी चीजें जो है हर जगह फैल गई मीडिया के थ्रू, और इसी वजह से ये केस आया कि क्या मीडिया जो जुडिशियल जो प्रोनाउंसमेंट है, जो जुडिशरी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, क्या उसको मीडिया दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है, whether they have this freedom or not. So this case is basically based on that particular event. So let's look at this particular case, the facts, the issue, and the observations made by the Honorable Supreme Court. So in this case, the Supreme Court was dealing with a matter wherein the Election Commission wanted to seek directions from the Honorable Court to restrain media from reporting the remarks passed by the Madras High Court judges against the Election Commission, wherein they were blamed and held responsible for the second wave. तो यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गया इस पर्टिकुलर केस में, और उन्होंने कहा कि भी मीडिया को आप रोकें कि वो जो टिप्पणी यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है उसको वो ना दिखाए। ठीक है, तो इस चीज के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाता है। So now just look at the background or the facts of this particular case कि किस तरीके से केस आया। So a candidate of AIA-DMK of Kurur Legislative Assembly constituency and who is also district secretary filed a writ petition in Madras High Court to ensure that COVID-19 protocols are followed in the polling booth in Kurur Legislative Assembly constituency of Tamil Nadu, and that was accepted by the Madras High Court under 226 of the Indian Constitution. तो यहाँ पे जो AIDMK के जो कैंडिडेट थे करूर लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो यहाँ पे जो है they filed a writ petition in the Madras High Court under Article 226 कि भाई सभी बूथ्स पे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, जितने भी पोलिंग बूथ्स है इन सब पे, और उसको जो है मद्रास हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, उस पिटीशन को वहां पे एडमिट किया मद्रास हाई कोर्ट ने। Now see what happened that on 16th April 2021,
With regard to the rising number of corona cases, the AIDMK candidate sent a representation letter to the Election Commission to take adequate steps and precautions to secure the health and safety of the officers in counting booth. So 16 अप्रैल 2021 को यहाँ पे कोरोना केसेस बढ़ रहे थे। इसको देखते हुए जो AIDMK के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने वहां पे एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है एडिक्वेट स्टेप्स लें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें सभी पोलिंग बूथ्स पे, जिससे कि हम सेफ्टी सिक्योरिटी जो है सिटीजन्स की सिक्योर कर सकें। As no response was obtained by the election commission, hence a writ petition the High Court was filed to seek the direction that significant steps are taken and arrangements were made in the COVID-19 protocol on 2nd May and also to ensure counting of the votes in Kurur Assembly constituency. तो जब वहां से कोई रिस्पांस बहुत ज्यादा नहीं मिला इलेक्शन कमीशन से, then this person went to the High Court through the writ. Then this writ petition was heard by a two-judge bench of Madras High Court, comprising the Chief Justice of Madras High Court, Justice Sanjeev Banerjee, and Justice Senthi Kumar Ramamurthy, and the order was passed on the 26th April 2021. तो यहाँ पे दो जज बेंच की डिवीजन बेंच ने यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट में इस केस को सुना और अपना ऑर्डर प्रोनाउंस किया। Even though the order was passed by the Madras High Court, the thing which irked the Election Commission was the remark passed and certain observations made by the judges during the proceedings which did not go well. तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को बाकी चीजों से उतना ज्यादा इशू नहीं था। जो भी जजमेंट यहाँ पे दिया, जो भी ऑर्डर दिया, that was not a very big thing for the election commission. But the election commission, why this controversy arose, because of the remarks which was made by the election by the Madras High Court for the election commission. Election commission के लिए जो इन्होंने कुछ चीजें बोली, उस वजह से सारा का सारा बखेड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ। The remarks which were made by the judges and were pointed out in the petition are the solely responsible institution for second wave of COVID is the election commission, and election commission should be charged for murder. तो यहाँ पे कहा गया है कि भी ये सारी जिम्मेदारी जो सेकेंड वेव की है वो कुल मिला के जो है इलेक्शन कमीशन की है। इसने इलेक्शंस करवाए, इसी वजह से सारा कोविड फैला, और इलेक्शन कमीशन को तो जो है मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ऐसा इन्होंने ओरली बोला। इट वाज नॉट ऑन रिकॉर्ड, और ऐसा कुछ भी मतलब ऑर्डर के अंदर नहीं था, ये एक ओरल रिमार्क था जो कोर्ट के अंदर यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट में बोला गया। तो the above remarks were made orally and this was not recorded in the order of the High Court, but the media reported the remarks which made headlines in print, electronic and social media. तो जैसा कि मैंने बताया that it was not a, it was made orally. It was not on record, not in the order sheet, not nowhere. But it was reported by the print, electronic and the social media, and that is why this whole controversy arose. This made the Election Commission file a special leave petition before the Supreme Court of India that their miscellaneous application was not assessed based on merits and also regarding the oral observations and the remarks of the Madras High Court. तो इन सब चीजों को लेके यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसने SLP फाइल की in the Honorable Supreme Court, which is the present case. Now just look at the issue. What is the issue in this particular case? Whether the media should be restrained from reporting oral remarks made during the judicial proceeding. क्या जो oral remarks दिए जाते हैं कोर्ट के अंदर, क्या उसकी रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे मीडिया को रोका जाना चाहिए? So this was a question in this particular case. So what does this Supreme Court observe here that we will see? Supreme Court ने यहाँ पे क्या observation दी? The Supreme Court observed that oral remarks made during any judicial proceeding are never recorded as part of the order or judgment, and thus the question of removing does not arise. तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो ओरल रिमार्क्स होते हैं जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान बोले जाते हैं वो कभी भी नेवर रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ ऑर्डर, वो रिकॉर्ड तो होते ही नहीं है कभी जजमेंट या ऑर्डर के तौर पे, तो उसको रिमूव करने का मतलब ही नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसको रिमूव कैसे किया जाए? The court did agree that the remark made by the Madras High Court judges were harsh. यहाँ पे ये जरूर माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो रिमार्क्स यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने दिए डेफिनेटली वो बहुत हार्श थे. The apex court said that while making such
off the cut remark, the statement judges should restrain themselves in open court. तो यहाँ पे सलाह भी दी सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि जितने भी जजेस होते हैं उनको जब भी वो इस तरीके की रिमार्क करें तो उन्हें देखना चाहिए कि वो किस ओपन कोर्ट में इस तरीके की बातें करने से अपने आप को रोकें. It was emphasized that the language used by the judges while making observation orally or in the judgment should be in judicial propriety. तो कहा भी जुडिशियली करेक्ट होना जरूरी है जो भी रिमार्क वहां पे दिए जाते हैं जजेस के द्वारा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया. Supreme Court rejected the prayer of the Election Commission to restrict the media from reporting any oral remark made by the judges, as it strikes the fundamental principle guaranteed under Indian Constitution. Supreme Court ने हालांकि यहाँ पे इस बात के लिए नकार दिया कि भाई मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जाए फ्रॉम रिपोर्टिंग, बिकॉज वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था दैट इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल विच इज गारंटीड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वो तो उनका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. डेफिनेटली दे हैव द राइट टू report all the things which is there in the court. Furthermore, the judges explained that the concept of open court requires that information regarding the judicial proceeding in the court must be accessible to the public, and thus it should be made available in the public domain. तो यहाँ पे कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि भाई जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जो ओपन कोर्ट में होती है तो उसका मतलब ही यही है दैट थिंग्स टू बी इन द पब्लिक डोमेन. सो इफ इट इज गोइंग इनटू द पब्लिक डोमेन देन हाउ कैन वी रिस्ट्रिक्ट द मीडिया? इट इज there is no sense of restricting it. The court also took the example of the print media reporting the trial and the court proceeding during the British Raj, like sedition trial of Lokmanya Tilak. तो कहते हैं यहाँ तक कि मीडिया तो जो उस समय में जो होता था जिस वजह से सेडिशन के जो केसेस होते थे उस तरीके के केसेस भी उस टाइम पे भी प्रोसीडिंग अंग्रेजों के समय पे भी इस चीज को रिपोर्ट किया जाता था. The Supreme Court judges advised that it would be better if the constitutional authorities accepted the new reality rather than complaining. तो कहता है यहाँ पे constitutional authorities को जो है नई रियलिटीज जो आज की हैं, जो मीडिया है जो बहुत फास्ट हो चुका है, हर जगह एक्सेसिबल है, ये सारी चीजें रियलिटीज को अपना लेना चाहिए इंस्टेड कि हम बार बार कंप्लेन करते रहे कि मीडिया ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है. इंस्टेड ऑफ वी मस्ट मेक आवरसेल्फ acceptable to all these things. न्यू ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से हमें भी चलना पड़ेगा. The court also praised the High Court for its commendable job during the COVID crisis. और साथ ही यहाँ पे हाई कोर्ट को जो है यहाँ पे शाबाशी भी एक तरीके से दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस तरीके से उसने कोविड के दौरान काम किया और एक्टिवली यहाँ पे जो है कई सारे डिसीजंस दिए जिससे कि कोविड-19 को हैंडल करने में काफी हेल्प मिली. Hence, the apex court included the media reporting of judicial proceeding under the fundamental rights of freedom of speech and expression, stating that it is part of freedom of press. तो कोर्ट ने माना कि रिपोर्टिंग करना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की ये जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये अंतर्गत आता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और आर्टिकल 19 जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस. So definitely it is a fundamental right and cannot be denied to the media. तो यहाँ पे कहा गया है कि मीडिया चाहे तो डेफिनेटली दिखा सकती है वो सारी चीजें, वो चीजें रिपोर्ट कर सकती है बिकॉज इट इज समथिंग विच इज फंडामेंटल एंड इट इज within the ambit of freedom of press. So these were few judgments which were very very important with respect to the upcoming examination. These things can come into your examination with respect to this particular case ki bhai in which case it was said ki judicial proceeding or reporting of the judicial proceeding is also a fundamental right and it is covered under freedom of press. So you have to quote this particular case. So these judgments are very very important. So kindly take a look at the judgments we have discussed today. We will come up with more such videos, so stay tuned with us. Subscribe our channel for the more updates. Thank you so much. Thank you for joining.